Bismillahirrahmanirrahim. Sorry for the little delay because our पिछला session थोड़ा extend हो गया था and then we had to rewind few things before moving on to the next. So apologies for the delay and I hope no offense meant here. Uh, Now this session is about our School of Systems and Technology जहाँ पे हमारे तमाम software engineering IT related side. Taqriban we have about 3,500 students there in that school and they are following different domains for specialization in their career in their academic journey. तो उनके रोड मैप्स हमारे एक चलते आ रहे हैं, बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं माशाल्लाह, दे आर गेटिंग एम्प्लॉयड और चीज़ें हो रही हैं. नाउ वी वांट टू बी लिटिल प्रोएक्टिव एज वी सी द क्यों मेरी पूरी टीम मार्केट में जाती है, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद इंडस्ट्री प्लेयर्स ऑल्सो. So we want to clearly understand the emerging trends and challenges and the roles जो industry expect करती है from academia in managing those challenges and riding up on those trends ताकि we can become backbone of the industry, we can supply them high quality resources जिसको talent कहते हैं हम and ताकि seamless उसमें integration हो जाए. ना उसके लिए हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, कोऑप प्रोग्राम है जिसमें बच्चे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं फॉर 8 months. दैट वी हैव फैकल्टी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एंड वी हैव लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम. इंटर्नशिप बाकी कन्वेंशनल चीज़ें तो हो रही हैं. तो हमारी यहाँ पे फैकल्टी इज ऑल्सो देयर जो आपके सुनेगी आपकी बातें और समझेगी और दे विल बी सीइंग कि हमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी है अपने रोड मैप्स में, क्योंकि हमें एक बेसिक्स पढ़ानी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके बाद हमें टिपिकली या पर्टिकुलर कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है अपनी लर्निंग जर्नी में, तो वो भी आपसे ये मशवरा लेना चाहेंगे. सो बिफोर आई मूव ऑन आई विल क्विकली लाइक टू इंट्रोड्यूस द पैनल. Mr. Mudassir Malik, he is founder of Technologies. CEO Apps Chennai is his one of the brands which he is famous with, and he is Fortune 500 की भी बहुत सारी companies इनकी clients हैं. And he's a serial entrepreneur and a groom and incubators में भी इनका बहुत role है, and he's very fond of grooming students for their world of work, or we are very happy to have him with us. Then we have Yasir Awan Saab, who is director of Mindstorm Studios, and I receive copious amount of papers about everybody. I like to be as short as I can, but I like to define them so that panelists can also connect with them. So he is taking Pakistan on the roadmap of game development, which is one of the fastest growing industries. And he is a very keen player in it, and he runs Mindstorm Studios, Mr. Yasir Awansab. And then we have Zishan Hassan Saab. Zishan Hassan Saab is founder of Grassroots Consultants. He has over 25 years of experience, have worked in different countries, including Australia, Malaysia, UAE, Pakistan. He has been with banks and NIB Bank, Bateen. Then he has been with American Express, ABN AMRO, very rich experience. He has been working with Telecom in New Zealand, Australia, and UAE. So he is with us, and I'm sure he can enlighten us more because fintech भी आ रहा है जिसमें इनका exposure है, उसके अलावा बाकी domains में भी है. Then we have Mr. Zain Asif, he's CEO and founder Quantum IT. He's director of artificial intelligence and business intelligence at Argon Tech and Wiltco Technologies. So again, a very powerful domain or emerging hai, and we would like our graduates to get benefit from his analysis, his experience, areas students should focus on, faculty ko apne roadmaps mein, in domains mein kya karna hai, because this is one of the highest paying domains also in IT industry. Then we have Mr. Arsalan Ali, he is CEO of Cheyenne Solutions, and he has among the top-notch IT service provider around the globe, dealing web development, custom software development, and IT consulting. And again, copious amount of achievements and papers. Then we have Mr. Aftab Ahmed, who is CEO of Assortech Private Limited. And he is again a techie guy, and he has a lot of social work and other things. He has a lot of achievements in his career. So then we have
Dr. Malik Tahir Hassan is Chairperson, Department of Software Engineering from UMT. We have Dr. Sajid Mahmood, Chairperson, Department of Informatics and Systems. Then we have Dr. Muhammad Shuaib Farooq, who is Director of Final Year Projects. FYPs is the name of the game to make the students' journey and transition from academia to industry. It can be sweetened if we play it right here, and we need industry to come forward and work with our students in achieving the targets. Then we have Ghulam Mustafa Saab, is Program Manager for BSIT. Then we have Dr. Nabil Barot Saab, and he is इन्होंने डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए एक ट्रिमेंडस चीज उन्होंने क्रिएट की, वो खुद ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. Then we have Dr. Asma Nasir, who is also assistant professor, and they are all involved in roadmap adjustments. So I will like to start the conversation by uh, asking the panelists, Dr. Mudassir Malik Saab, Yasir Awan Saab, Zishan Hassan Saab, Zain Asif, Arslan Ali, and Aftab Ahmed, कि अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दें 3-3 मिनट में, और उसके बाद ये हमारे पैनल सुनते जाएंगे, एंड देन हम वहाँ पे इसको ओपन वन ऑन वन सेशन शुरू कर देंगे, एंड विल मेक द एडजस्टमेंट्स एज वी गो अलोंग. तो टू रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ ऑल द पैनलिस्ट, मैंने सोचा कि हम इसको बजाय कटआउट रूम में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सबका ग्लोबल टेक अवे इस पे हो. So thank you very much, Mudassir. I would like you to take the initiative and tell us your expectations, और हमारे रोड मैप्स में हमें क्या चीज देखनी चाहिए, keeping in view your company's particular requirement and your understanding about the industry you are in, which is IT. Thank you. बहुत शुक्रिया खालिद सर. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. खालिद साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ शायद एज अ कंपनी और एज एन इंडस्ट्री में इससे अखज़ करना चाहूँगा या इससे मैं एक्सट्रैक्ट लेना चाहूँगा, वो ये होगी कि हाउ ईजिली वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है, हम कितना सहल तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं. आपकी साइड से जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो रिसर्च है, हम उसको कैसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पास देख सकते हैं. वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जो हमारे लिए जनरेट हो रही हैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो टेक्निकल साइड से हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की साइड से हैं, चाहे वो डाउन द रोड यूआई यूएक्स से लेके एआई एमएल तक है, हम कैसे आपके साथ वो एक सिंगल ग्राउंड पे शेयर कर सकते हैं. क्योंकि इंडस्ट्री साइड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी कॉमन होंगी. सो वो ऐसे कौन से ज़राए हैं जो इस तमाम प्रोसेस को हमारे लिए आसान कर सकते हैं. Good. Okay. So communication means आपका हमारा आपस में राब्ता रहना चाहिए, for which we need to create a platform, right? जी बिल्कुल. Great. Thank you. जी यासिर वन साहब, would you like to comment on this? Thank you so much for having me. So there are quite a few things that we can look at when it comes to the roadmap in academia when it comes to teaching. I believe one of the biggest things that we have looked at in the past 10 years is the topic around bridging the gap between industry and academia. There are a lot of experiments that have been done, and I feel it has to start with recognizing a clear mismatch, and that is in academia or in industry to start with. It's too much about what's happening right now, because industry is it's super important to kind of like keep in mind timings of things, because majority of the businesses, they fail because if they were late or if they were early. So businesses are generally about what's happening right now. Uh, and that kind of like pushes us towards telling academia to move to what we call relevant teaching. Okay, whatever the skill set is really right now, that is should be our focus. I believe that's the first notion we need to question, because academia should always be looking forward in terms of, okay, expose students to what's going to happen in the next 10 years, and focus more on that instead of relevant teaching. I think that's the first and foremost important point. The other point is introducing more empathy, and the only way to do it is to kind of like practice empathy yourself as well. And what empathy does is it introduces a lot of customer centricity into the kind of work we do anywhere, and that bridges the gap when it comes to a lot of work being done in academia, when it comes to projects or when it comes to learning in courses. The customer perspective is always missing.
The perspective that we need to go out there, look at the problems around us, and we need to put our skills to use to solve those problems is something that has gone missing. And one way to kind of like do that is to incorporate modern design thinking principles in teaching, and kind of like teach students those design thinking principles and push them in courses to kind of like put it to use, so that they really also understand the power of what they are being taught, and they also understand what is it, how is it that they can use this skill to bring some change. And that also kind of like applies to when we talk about research. When we have talked a lot about in the past 5 years commercialization of research, but we have not talked about conducting research that is commercializable, which is an entirely opposite approach of doing things. uh, and I feel these are kind of like the challenges that are going to be grow bigger and bigger, because from millennials to now we're moving towards Gen Z's and Gen Alphas, and they acquire knowledge in a very different way, and they work in a very different way. And these are the things that are going to be super important in the future, when it comes to how academia responds to giving people knowledge that they need. अच्छा ग्रेट आई थिंक आपने बहुत एक डिज़ाइन थिंकिंग का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हो गया और दूसरा हाउ टू हैव अ रिसर्च व्हिच कैन बी कमर्शलाइज्ड and for that enabling environment जिसमें empathy हो and exposing students to the future upcoming challenges and things and how to prepare them. So well taken Yasir Wan sahab, great. Zishan Hassan sir, I would like to come to you, sir, because आप पढ़ाते भी रहे हो, you have extensive experience and you're a speaker also, as I understand. So we like to have your thoughts, sir. So I agree with what Yasir just said in terms of we're preparing the students which are basically being prepared for the future. So if we look at what the industry is doing today and try to basically prepare them to do that in the future, there's going to be a disconnect, right? So because the industry itself is being disrupted. And this last year has been a classic year that it has actually shown that there is going to be a very different way of working moving forward. Post-COVID, everything has gone online, everything is happening virtually, whether it's education, whether it's work. And so how that is going to form, how things are going to change, what type of skill sets are required, how will people interact uh, to come together to be productive, all that is now being redefined. Earlier, people used to be employed by organizations and they used to come to an office and go and clock in certain number of hours for them to be able to earn a paycheck at the end of the month, right? Now, would that still remain relevant going forward? Companies going to be paying people for the amount of time that they clock in an office, or is it going to be paid on the output, right? If it's going to be based on an output, how will our output be captured? How will that be defined? So there's a lot of rethinking which is going to take place. It's already happening, but a lot more will happen because this one last year and this year as well has shown that despite the lockdown, despite that business being forcing people to work remotely, work has continued. Whether it's a bank, whether it's a telco, whether it's a SME. So for academia, for universities, institutions, we need to revisit what kind of skills are we going to help these individuals learn. The big thing is that earlier we used to define a market or an industry based on the geographic location. अगर बच्चा जो है वो लाहौर की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है और लाहौर का रहने वाला है, so most likely he will try, as first preference would be to find a job within the city of Lahore. If not Lahore, he'll probably navigate to Islamabad or to Karachi, the job centers, to secure a livelihood. Now, it doesn't matter today where you are. We're having this particular meeting. I'm sitting in Lahore. I could have been sitting in London, right? And I could have been connecting with you. And likewise, each one of us who's on this Zoom call could have been in any part of the world at any different time zone. And yet we will be able to communicate, collaborate, and do things. So when we define the industry, we need to rethink that what would that industry look like? Is it going to be local? Is it going to be global? If it's going to be global, where it doesn't really matter कि आप कहाँ से आपका जो ये individual है जो he's trying to basically employ himself,
where he's going to be based is irrespective. What he or she can contribute in terms of work output, productivity, that is going to be paramount. And for that output, he or she is going to be paid a salary. So we need to see how we're going to help create that kind of a skill within our universities for our students, right? The other thing is that the way a current education model functions is that because I also teach at lumps, we have a semester. In semester, we have so many contact sessions that we have with the students, whether they're happening in a classroom, and in the case of COVID, happening online. So irrespective of the media, whether it's a classroom or online, it's still where students can't connect with the instructor and they have so many hours of instruction to be given and so many reading material to go through, and then that being tested through assignments and quizzes and projects and whatever, right? All of this seems quite artificial, has been quite artificial throughout. Learning happens by doing. You really internalize the concepts, the skills by applying yourself and doing those skills. जैसे आज से पिछली जो generations थी, we used to have this concept of apprenticeship, right? Hands-on learning. Now, are we still going to continue post-COVID with the same way that we have been educating students, which is classroom-based or online? Or are we going to actually, along with the concepts, along with the knowledge, along with the theories that we share and we sort of get the students across, are we also going to help them learn practical skills by redesigning the way we teach them, which is, I mean, UMP has taken a great initiative of reaching out to the industry and trying to have this kind of a discussion where you want to actually get input from the industry players. And so the question is that, can some things, we talk about internships, 6 हफ्ते की internship गर्मी की छुट्टियों में या, you know, is that going to be adequate to help a student learn the skills, or can something be redesigned in the way? So again, I'm picking up on things that Yasir has said in terms of redesigning education as well. What would that design look like? How many hours would they have to basically study, and how many hours would they have to basically apply the concepts that they have learned on a practical solution? Yeah, because once they graduate, they have to basically apply to solve problems to get paid. Right? That's the output the industry would be looking for, whether it's a local or a global industry. Acha, great. अब distance learning है, online है, digital है, empathy came up, time zone, skills, output based, and तो एक word जो मेरे ज़हन में आ रहा है इस वक्त, how to create digital empathy, that has to be studied, and probably it's both of art and science, because learning and apprenticeship and workload management, I think very well said, because यहाँ पे हम जब बच्चों के साथ बहुत सारे हैं जो कि हमारे incubator में हैं, we have our own incubator, तो वो यही कहते हैं कि जी हम कितना टाइम अपने प्रोजेक्ट पे दें, इंक्यूबेशन पे दें, कितना हम पढ़ाई पे दें, you know, one of the two suffers, how to manage that. तो वो challenges बिल्कुल हैं. Great, Rishant Saab. We'll come back to you with another round of questions. Zain Asif Saab, quantum IT consulting, AI and BI, this is where everybody is talking about. Please make us wiser on it, and how should we inculcate its culture and skill in our academic journey, in our roadmaps? Sure. Thank you so much for having me on board. So like आपका सवाल ये है कि how can we prepare the students for this emerging technology, artificial intelligence, and ठीक है. तो let me just basically distance learning के ऊपर I have been teaching at different universities as a visiting faculty, और इसमें ये कि हम लोग का जो last year हम लोगों ने जो program था UMT के साथ, जिसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिंकेज प्रोग्राम था, कि इंटर्नशिप्स वगैरह ऑफर की थी. आई फाउंड सम गैप्स इन द सिस्टम. तो उसमें यह है कि हम लोगों ने वी नीड टू रीडिजाइन हाउ वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स. इंडस्ट्री में व्हाट्स हैपनिंग इज कि आप लोगों के पास ना एक एक्सपेरिमेंटेशन का
جو گراؤنڈ ہوتا ہے. The learning is on their own time. جو اسٹوڈنٹس کو بیسکلی آپ بیٹھ کے کلاس رومس میں اس طرح سے پڑھائیں جس طرح سے فزیکلی پڑھاتے ہیں, that needs to be revised. کہ آپ لیکچرز بیسکلی جو کانٹینٹ ہے وہ ایک اپلوڈ کر دیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو آپ لوگوں کے پاس ہے. اینڈ the students they should come to the classroom for discussions rather than just being taught the same way جو کلاس روم میں آ کے لیکچر ڈلیوری لرننگ ان کے اپنے اون ٹائم پہ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس لائک دے ور ویری کینڈیڈ ود می جب میں پڑھا رہا تھا UMT میں, تو وہ کہتا کہ سر آپ رات کو اگر کر لیں لیکچرس تو ہم لوگ everyone's awake at that time and I was like are you serious یا تم یہ مذاق کر رہے ہو. and they were quite serious کہ سر رات کو 1-2 بجے جو ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں وہ صبح 8-9 بجے ہماری کلاس آنکھیں کھلتی نہیں ہے, ہم لوگ کلاس میں سو رہے ہوتے ہیں, بس اٹینڈنس لگوائی اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. so what if they could learn on their own time and we could have a discussion. I had this practice میں نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا and I mean I did have some positive results. Of course like students ہی ہوتے ہیں, وہ جب تک ان کو نمبروں کی ٹینشن ہوتی ہے تب تک وہ کام کرتے ہیں. So like rewards and punishments آپ نے اس چیز کو دیکھ لیجیے گا, like how can we instill this. اچھا when it comes to industry side expectation کیا ہوتی ہے, core foundations. میں کسی بھی فریش گریجویٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ اس میں جو لیٹسٹ ٹرینڈز انڈسٹری میں چل رہے ہیں وہ کیا چیز چل رہے ہیں اس کو کیا پتا ہے. ہاں what I do expect is کہ اس کی فاؤنڈیشنز جو بیسز ہے یعنی ڈیٹا اسٹرکچرز ہوگی, ڈیٹا بیسز ہوگی, الگوریدم ہو گیا, اس کے وہ کانسیپٹس کیسے ہیں. اور میرا انٹرویو اسی پہ ہی ہوتا ہے ایون دو کیونکہ بیکاز لائک آئی ہیو ٹو سی کہ وہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے اسٹوڈنٹ کا اور وہ کس طرف جا رہا ہے. So like when it comes to designing the system, suggestion میری یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کہ rather than کہ کلاس روم کے طریقے سے پڑھائیں جیسے ایک بورڈ کے اوپر آ کے پڑھاتا ہے, آن لائن از ویری ایزی. I mean it's easier for the students, it's easier for the teachers, اور آپ بہت سارا کانٹینٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں. کانٹینٹ ایک اچھا سا آپ پریپیئر کر لیں اور اس کو آپ رکھ دیں like and you can upload it on the LMS, students can learn it and you can discuss it. جو آپ کا 1.5 hours کا جو لیکچر ہے اس میں ڈسکشنز ہو اینڈ وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹس آپ اس کے بیسس پہ رکھ سکتے ہیں. ایک اور سجیشن جو ایک انٹرنشپ اینڈ فائنل ایئر پروجیکٹس کی I've been in that, اتنا کوئی سکسیسفل نہیں رہا تھا. اگین اسٹوڈنٹس کے پاس وہ یہی کہتا ہے کہ بیکاز the university does not compensate کہ دی آورس جو میرے پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹ کر رہا ہے. سو واٹ ایف اگر آپ یہی چیزیں اسائنمنٹس کی شکل میں دے دیں یا ان کو آپ کہہ دیں کہ فائنل ایئر پروجیکٹ لیٹس سے کسی کورس کے ساتھ اگر لیٹس سے if I am teaching a course at UMT and if the student is working with me تو وہ میں اس کو اس کے پروجیکٹ کے جو 20 مارکس ہیں یا اس کے مڈ میں اس کو کمپنسیٹ کر دوں. سو there should be a mechanism where the students are compensated. یہ چیز ہماری انڈسٹریز اکیڈیمیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. anyone serving in the industry will be compensated in the academia. جو ہم لوگ بیسکلی اگر روڈ میپ جو باہر کے ممالک کی کاپی کرتے ہیں تو this is what we don't have in our system. آپ اس کو اگر کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کر لیں تو that would be great. کہ آپ مثلا let's say if he works 20 hours a week میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کے جو 20 hours کے جو لیکچرز ہیں کسی طرح اسائنمنٹس یا پروجیکٹس یا کوئزز کے اندر وہ کمپنسیٹ کسی طریقے سے ہو رہا ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the student is just وہ گریڈ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. سو اگر ہم لوگ انڈسٹری کی کمپنسیشن اس کے اکیڈیمیا کے اندر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں that's great. That's it from my end. Thank you so much. Excellent thought because I think یہ تھوڑا disruptive ہے but بہت practical thought ہے and I think اس کی طرف ہمیں سوچنا ضرور چاہیے. اور شاید ہمارا کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں بچے اگر پروجیکٹ لے لیتے ہیں تو ان کو کمپنسیشن ملتی ہے, ہماری فیکلٹی بہتر بتا سکے گی. موونگ آن ٹو ارسلان علی صاحب, CEO شایان سولوشنز. Thank you, sir. آپ کیا اس پہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ Yeah, sure. So first of all, I would like to tell you this some of the challenges and the emerging technologies which are happening on the horizon of the industry. Like the areas of cloud computing, automation, and business intelligence and artificial intelligence are in the high demand these days. So the academic sessions should be getting out of this monolithic things and the traditional things, and more the courses should be get upgraded according to the latest trends and technologies.
baselines are very important. I fully agree with the with Zain Saab, that the core concepts should be there, but the students should be equipped with the latest trends and technologies, so they understand those emerging things as well. Beside that, the IT industry is facing with the challenges of the entrepreneurship as well. Entrepreneurship skills are on the high demand these days, and the students should not be only equipped with the technical skills only. They should have the managerial skills, time management skills. They must have with them. And the communication skills are the most important things, definitely, for the IT industry. So these are the things which should be which the candidates should be equipped with, students should be equipped with, and these are the things where I see that the most of the differences are there. This is where the students come as a raw into the industry, and after 2 to 3 years, they learn these things in the industry, and then they identify that these skills were not but never taught them, and this is where they find the initial rough surface of learning those things. And after that, they realize that, okay, yeah, those things were have been taught earlier, then we would have been in the quite ahead in the game of the over the career. So yeah, these are some of my thoughts. So yeah, thank you. Excellent, शायान. अब इसमें जो सॉरी अरसलान, जो स्पेसिफिकली बिकॉज आप थोड़ा सा कंप्यूटिंग और बाकी चीज़ों को भी देख रहे हो, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि एक जब बच्चा ग्रेजुएट करता है तो उसके पास क्या मिनिमम स्किल सेट होना चाहिए? मिनिमम स्किल सेट्स के अंदर तो बेसिकली उसको अपनी कोर जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर होने चाहिए. नेमिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस स्किल्स, प्रोग्रामिंग, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, और जो उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कोडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या कोडिंग स्किल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनके ऊपर तो इसकी ग्रिप तो होनी चाहिए. क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब हम एनालिसिस करते हैं किसी फ्रेश स्टूडेंट को, तो हम डेफिनेटली उसको एडवांस लेवल्स के ऊपर जज नहीं कर रहे होते, हम उनको बेसिक थिंग्स के ऊपर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर तो इनकी ग्रिप तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इसके अलावा जो है, अगर उनको इंडस्ट्री के अंदर मजीद उनको ग्रोथ चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्सनस का टाइम जो है वो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो है ना हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड अप हो रहा होता है कि जी बिहेव कैसे करना है, ऑफिस में कैसे बैठना है, फिर उसके अलावा आपने से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने उसको कम्युनिकेट करना है, आपके वेल रिटन कम्युनिकेट करना है. तो यहाँ पे आके हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ती हैं. आईटी के जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो तो इंसान जब प्रोजेक्ट के अंदर आता है तो फिर उसके साथ ही वो सीख सकता है. लेकिन जो बाकी की जो सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं और अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करना, हाउ टू बिकम अ टीम प्लेयर, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग एज वेल. कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होता है, क्योंकि आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं कर रहा होता, और सॉफ्टवेयर हाउसेज में हर कोई टीम कोलैबोरेशंस के अंदर आता है. सो हाउ टू बी अ टीम प्लेयर, या जो इंडस्ट्री के जो डिफरेंट टूल्स हैं, स्क्रम्स हैं, एजाइल मेथडोलॉजीज हैं, ये चीज़ें हमारे लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिसेस होती हैं, जबकि एक स्टूडेंट होता है उसके लिए एलियन थिंग्स बन जाती हैं. ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. हमारी उनकी लैंग्वेज में एक डिस्टेंस आ रहा होता है, गैप नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से क्लियरली तौर पर बता सकते हैं अच्छा ये फ्रेश ग्रेजुएट है, ये एक्सपीरियंस पर्सन है. सो जहाँ पे ये गैप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे ही हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर आ सकते हैं. Great. तो अरसलान, your point well taken. हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स के बगैर हार्ड स्किल्स को ऑपरेशनलाइज करना भी मुश्किल हो सकता है. तो मूविंग ऑन टू आफ्ताब अहमद साहब, इज सीईओ Sortic प्राइवेट लिमिटेड. तो आफ्ताब, आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स एंड योर एक्सपीरियंस के व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ग्रेजुएट यू लाइक टू, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी एक जब ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलता है, जहाँ उसने 30-40 बहुत सारे कोर्सेज पढ़ने हैं और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज पढ़ने हैं, सोशियोलॉजी, इस्लामियात भी पढ़नी है, तो जब वो ग्रेजुएट होकर निकले तो उसको क्या कम से कम आना चाहिए? मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होंगी?
Thank you so much, Mr. Khalid Naqi sir, for थोड़ा providing सा me the प्लीज स्पीक opportunity लाउडर, to थोड़ी discuss. आपकी आवाज में मुझे Can you hear me? प्रॉब्लम आ रही है. या इट्स बेटर नाउ. जी, अब आपको आवाज आ रही है? All right. Thank you so much for providing me the opportunity. I'm very glad today, being an alumni of UMT. So it's an honor for me. I'm here to present myself in the front of my teachers, my professors as well. जहाँ तक आपने बात की है जो इंडस्ट्री की और आपके एकेडेमिया की, मेरे पास कुछ रिसर्च है जो मैंने कर रखी है, और लास्ट मीटिंग के अंदर जब आपसे मेरी मीटिंग हुई थी तो तब भी मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी कि सबसे जो मेजर फैक्ट है हमारे पास वो है गैप, बिग गैप है इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का. मैं आपके जो सेमेस्टर्स का मॉडल है इससे डिसएग्री करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमेस्टर मॉडल है, हम लोग 8 सेमेस्टर तक इस बात की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि स्टूडेंट जो है वो किस डोमेन में जाना चाहता है. इसी सपोज आप 4 ईयर की जो आपकी हमारी डिग्री है, डिग्री करने के बाद स्टूडेंट को, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट को मैंने फ्रेश ग्रेजुएट को ये पूछा कि आप व्हाट स्टैंड फॉर CGPA, एंड ही डोंट नो अबाउट द स्टैंड फॉर CGPA एज वेल. सो कैन यू इमेजिन कि उसका 4 ईयर का क्या एक्सपीरियंस होगा, वो किस डोमेन की तरफ अपने आप को मूव करना चाहता है. उसको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता होता, उसको अपना CGPA तक का नहीं पता होता, उसको अपना फार्मूला कैलकुलेशंस का भी ही डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हमारे जो सेमेस्टर का प्रोसेस मॉडल है ये चेंज होना चाहिए. किस तरह से चेंज होना चाहिए, मैंने एक ग्राफ भी बनाया है, आई विल शेयर इट आफ्टर द मीटिंग, कि आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर के बाद we need to specify the domains. जिस तरह से रिमेनिंग जो CEOs इन्होंने बात की कि AI है, हम लोग बात तो इंटरनेशनल लेवल की करते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स, बट हमारी जो स्टडी है वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं है. हम लोग AI की बात करेंगे, रोबोटिक्स की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जितने भी ब्लॉकचेन की सपोज हम बात करते हैं, बट हम जो पढ़ाते हैं वो इससे टोटली डिफरेंट है. इमेजिन करें कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बुक जो है वो एलोकेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, राइट. एंड उन दे डोंट नो अबाउट द आइडिया कि C++ क्या है. सो व्हाई वी आर टीचिंग देम. हमें तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि हम जिस आप किस डोमेन में फॉल करते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई जस्ट फॉर 1 ईयर कि आपकी डोमेन क्या है. आर यू अ गुड डेवलपर, आर यू अ गुड मार्केटर, are you a game developer? So we need to identify the core domain of our developer. दूसरी चीज ये है कि आपका जो SST का डिपार्टमेंट है, it should be a different from all other the departments. The reason is that अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम को भी देखें तो मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, 50% आपके पास मैनेजमेंट है और 50% आपके पास टेक्नोलॉजी है. सो आई कैन से द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट. तो आपके जितने भी रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी फोकस इस वक्त टेक्नोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड चीज़ें जो वो बेस कर रही हैं आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर. आई बिलीव हमारा जो आज का विजन, आज की जो मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए वो 2025 का विजन होना चाहिए कि हमारा जो रोड मैप है वो 2025 में आफ्टर ग्रेजुएटिंग द स्टूडेंट्स वो क्या होगा. जो आज आपके पास एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें उनके लिए सोचना चाहिए. वो लोग जो 2022, 3 और 4 के अंदर पास आउट होंगे, we don't need to care about that, but we need to care about the person who will join your organization now to onward. So that's the important thing. उसके साथ जो आपका SST का जो करिकुलम है, it should be updated time to time after every semester. It should be updated. आपका एक पैनल होना चाहिए जो इस बात का तयन करे, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाए कि इस सेमेस्टर के अंदर क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो होनी चाहिए. आई एग्री विद मिस्टर जैन आसिफ जिन्होंने कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जब 4 साल की डिग्री की है तो उसके बाद उस ग्रेजुएट को फ्रेश ग्रेजुएट क्यों कहते हैं आप लोग. मैं तो नहीं कहना चाहता कि आप 4 ईयर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टीट्यूट में स्पेंड करें और आप उसको ये एक्सपेक्ट करें कि वो फ्रेश ग्रेजुएट हो. वो लाई नहीं करते इस बात के लिए. हुआ ये कि मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी और 2017 में हमने एक टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किया. एंड बिलीव मी कि हमारे पास, कैन यू मी? जी जी ओके. आप कैन यू बिलीव कि हमारे पास सिंगल डेवलपर नहीं था उस टेक्नोलॉजी का कि मैंने उसकी एड्स भी लगाई,
میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی بہت زیادہ ایڈز لگائی کہ ہمیں کوئی سنگل ڈیولپر اس کا مل جائے. ہم نے کیا پلان کیا, میں نے سب سے پہلے ایک اور انسٹیٹیوٹ بنایا. دا نیم آف دا انسٹیٹیوٹ واز پروگرامر ہوپ. اب پروگرامر ہوپ میں نے سب سے پہلے ان اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا جو آپ کی آرگنائزیشن سے, ملٹیپل آرگنائزیشن سے گریجویٹ تھے. ٹرین کرنے کے بعد انہی لوگوں کو اپنے کمپنی میں ہائر کیا, جو ان میں سے پروڈکٹیو پرسن تھے ان کو ہائر کیا. اور کیونکہ ہمارے پاس سنگل پرسن نہیں تھا, کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ 2017 میں لانچ ہوئی, 18 میں نے اسے گریب کیا, اور ہمارے پاس کوئی ایک سنگل ریسورس نہیں تھا کہ جو اس کے اوپر کام کر سکے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جاوا پڑھ رہے ہیں, سی پلس پلس ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم کیوں اس ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جاتے کہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے, جس کے مارکیٹ میں پروجیکٹس ہیں, جو انڈسٹری اب اس وے کے اوپر موو فارورڈ ہو رہی ہے. ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ سی پلس پلس پڑھا لیا, جاوا پڑھا لیا, ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ دا لیٹسٹ ٹرینڈس. سو جب آپ کا گریجویٹ جو اسٹوڈنٹ جب گریجویٹ ہو, you should be aware about all the aspects of the industry which the industry is demanding from him. So that's very important. The second thing, تو میں ایک پروسیس ماڈل جو میں آپ کو بتا رہا تھا سیمسٹرز کا, اس میں یہ ہے کہ آفٹر 2 سیمسٹر آپ لوگ اس بات کی آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمیں اس اسٹوڈنٹ کو کس کیٹیگری میں فال کروانا چاہیے, اس کو کس کیٹیگری میں موو کروانا چاہیے. کیا اس کو ریسرچ میں لے کے جانا ہے, کیا اس کو موبائل ایپس میں لے کے جانا ہے, کیا اس کو ویب ڈیولپر بنانا ہے, کیا اس کو گیم انجینئر بنانا ہے. کیونکہ میں نے جو پڑھا پورے 48 سبجیکٹس میں یا پوری تھرو آؤٹ دا ڈگری, میں نے صرف ایک اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کا کورس پڑھا ہے, اور میری جو کمپنی بیس کر رہی ہے وہ پوری کی پوری کمپنی جو ہے وہ موبائل اپلیکیشنز ڈیولپمنٹ. وی آر ڈیولپنگ دا آئی او ایس اینڈ اینڈرائڈ اپلیکیشنز. سو کین یو امیجن کہ صرف ایک کورس سے میں اس کمپنی کو کیسے رن کروں, یہ امپاسبل ہے. سو اٹس مین آفٹر سیکنڈ سیمسٹر وی نیڈ ٹو پروسیڈ ود دا اسپیسیفک ڈومین کہ جس میں آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریلائی کرے. اور جو بات کر رہے تھے لاسٹ میں 8 سیمسٹر کی, میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, جس طرح انٹرنشپس کی بات ہوئی, کہ آپ اس کو سمر میں انٹرنشپس آفر کریں. میں نے میری ایک سجیشن ہے اس کے اندر, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ ایف آئی پیز بھی جو ہے کنڈکٹ کیے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, تو میں نے وہاں پر اس چیز کو یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جسٹ فار دا سیک آف جی پی اے وہ آپ کا ایف آئی پی وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو این آئیڈیا, ان کے پاس بگ ڈریمز ہوتے ہیں بٹ ان کے اسکل جو ہے وہ زیرو ہوتے ہیں. سو اٹس مین آپ جب ان کو ایف آئی پی کے لیے ایلوکیٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس زیرو اسکلز ہوتے ہیں. ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ, یا آپ وہ اپنی جو ان کا ویژن ہے, جو انہوں نے ایک آئیڈیا اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے, وہ اس کے اکارڈنگ ایف آئی پی بنا ہی نہیں سکتے. تو میری اس میں سجیشن یہ تھی کہ جو لاسٹ سیمسٹر ہو اس میں کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جائے. وٹ آئی ریکمینڈ کہ وہ ٹوٹلی بیسڈ کرے انٹرنشپس کے اوپر ود دا میوچل کولیبوریشن ود دا انڈسٹری, کہ انڈسٹری ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اور آخر میں میری 3 سجیشن ہیں کہ جتنے بھی ٹیچرس پروفیسرز ہیں موسٹ ریسپیکٹیبل ہیں, بٹ آئی بلیو کہ سمر کے اندر ٹیچرس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اسپیشلی ان ٹیچرس کی کہ جو ٹیکنیکل کورسز پڑھاتے ہیں. جیسے ہم اینڈرائڈ کی بات کریں تو اس کے ساتھ آئی او ایس بھی ہونا چاہیے, ویب کی بات کریں تو ان کو لیٹسٹ ٹرینڈز اینڈ ٹیکنالوجی کی اویئرنیس ہونی چاہیے. وہ وہی چیز وہی کورس نیکسٹ سیمسٹر کے لیے رپیٹ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایف آئی پیز ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریشن ہونی چاہیے, اس میں وہ ریئل ٹائم پروجیکٹس ہونے چاہیے. اور میں اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں ہی کوئی انوویشن سینٹر کی جس طرح آپ نے بات کی, ڈیفینیٹلی وہ ہونا چاہیے. اور اس کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ گریب کرے پروجیکٹس فار یور ایف آئی پیز اسٹوڈنٹس. سو ایف آئی پی اسٹوڈنٹ شوڈ نیڈ ٹو ورک آن دا ریئل ٹائم پروجیکٹس انسٹیڈ آف دیئر اون آئیڈیاز, because at that moment they don't have the money, they don't have any skills, but they only have the idea. So these are all things that was in my mind. So yeah, that's all. Thank you, Aftab. It was great. Matlab, at least you are trying to probe it deep down اور مزید دیکھ رہے ہو کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو بہت شکریہ. اب میں اپنا جو ہماری ایکیڈیمک سائڈ ہے اس کی طرف آؤں گا. اینڈ اوپن فلور اوپن ہے سر. ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب, ملک طاہر صاحب, ساجد احمد صاحب, شعیب فاروق صاحب, غلام مصطفیٰ صاحب, نبیل صابر صاحب, ڈاکٹر اسما نصیر صاحبہ, آپ کوئی بات کرنا چاہو انڈسٹری سے تو فلور از اوپن, آپ بات کر لیں ان کے ساتھ. اینڈ میری سجیشن صرف یہ ہوگی ان کے ساتھ کولیبوریشن کی بات کر کے دیکھیں, وے فارورڈ کی. باقی چیلنجز ان کو بھی ہمارے پتہ ہے, ہمیں بھی ان کے پتہ ہیں. تو لیٹس ناٹ گو ان ٹو وہ جو ہے نا چیلنجز کے اوپر ہم نہیں جاتے, وے فارورڈ پہ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو کوئی بھی بات آپ کرنا چاہو پلیز فیل فری.
अपना माइक खोल लें और प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मलिक ताहिर हसन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा सर, OCLB का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सबसे पहले तो, जब अरेंज अ वंडरफुल सेशन, थैंक यू। और ये जो हमारे गेस्ट हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी फीडबैक दी इन्होंने, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और कैंडिड डिस्कशन हो रही है, सो वी रियली अप्रिशिएट दिस। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ सर ने जैन साहब ने डिस्कस की कि ये ऑनलाइन टीचिंग ईजी है, स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी है और टीचर्स के लिए भी ईजी है। तो हाँ, अच्छा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ईजी तो है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर सेल्फ मोटिवेटेड हों, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हों, तो फिर तो दैट इज़ ट्रू। लेकिन यहाँ हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करना पड़ता है, अदरवाइज जो है ना, वो जब हमारे सामने होते हैं तो फिर तो हम कुछ ना कुछ उनके हल्के फुल्के डांट डपट भी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, जो मैंने फील किया अपने पिछले 1-1.5 साल के सेशन में। बहरहाल हम उसके साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह करे। बहरहाल स्टूडेंट्स भी मेरा ख्याल है जो वाकई पढ़ना चाहते हैं और टीचर्स जो वाकई पढ़ाना चाहते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि ये ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो जाए। स्पेशली जो असेसमेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया ऑनलाइन के अंदर। और ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि कम्युनिकेशन को किसी तरीके से हम बेहतर कर लें इंडस्ट्री के साथ। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो MOU वगैरह साइन करते हैं, सो दैट इज़ ग्रेट, वो करना चाहिए हमें। लेकिन उसके अलावा भी वो फॉर्मेलिटीज़ से निकल के कुछ इनफॉर्मल भी अगर हम कम्युनिकेशन को थोड़ा सा तेज़ कर लें तो वो भी हमें हेल्प कर लेगा, आई गेस, इन द लॉन्ग रन। फॉर एग्जाम्पल, हमें बात का डेटा चाहिए होता है इंडस्ट्री के लोगों से, अगर हम कोई मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं, अगर डेटा माइनिंग का काम कर रहे हैं, हमें बात का कोई R&D प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ ना कुछ उनके प्रॉब्लम चाहिए, उनके चैलेंजेस चाहिए होते हैं, तो क्विकली अगर मेरे वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएँ तो हम हमेशा उसे अप्रिशिएट करते हैं। इंटर्नशिप्स की बात हो गई, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की बात हो गई, आफ्ताब साहब ने बड़ी अच्छी इनपुट दी। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हमारा एक बना होता है हर डिपार्टमेंट का, फिर बोर्ड ऑफ फैकल्टी भी होता है। तो पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज़, जिसके अंदर हमारे एकेडमिक्स में से भी, यूनिवर्सिटी के बाहर से बड़े जो सीनियर किस्म के लोग होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्री से भी लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर हम अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन एक करिकुलम सिर्फ एक पार्ट है, वो आप ठीक कह रहे हैं। करिकुलम हम डिज़ाइन कर लेते हैं बेस्ड ऑन NCSE, HEC गाइडलाइंस, इंडस्ट्री की गाइडलाइंस, एकेडमिक्स की गाइडलाइंस, उन सब से। उसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं और वो टीचर्स भी हैं, तो हमें टीचर्स को भी अपडेट करना पड़ता है, तो दैट इज़ ट्रू। तो टीचर्स को अपडेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रॉपर असेसमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे तो फिर हम ऐसे लोग, मेरा ख्याल है कि रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकेंगे जो इंडस्ट्री के लिए रेडिली हेल्पफुल हों। लेकिन ये चीज़ बहरहाल हमें थोड़ी सी हम ये मार्जिन लेना चाहते हैं कि हमारा काम शायद ज़्यादा ये है कि उनके जो फाउंडेशन है उनको मजबूत कर सकें। उसके बाद इंडस्ट्री में वो आपके पास अगर कुछ ना कुछ सीख के आ जाते हैं, उनकी फंडामेंटल्स अच्छी हैं, उनके डेटाबेसेस अच्छे हैं, उनके डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, तो आई गेस कि आप उन्हें 3 महीने में, 6 महीने में अपने जो भी किस्म के टूल्स पे आप काम कर रहे हैं उन पर ट्रेन करके इंशाल्लाह उनसे काम करवा सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। anything else, Dr. Shoaib Farooq sir? Are you there? Naki Saab, if you allow me, I would want to add a few things. Please, feel free. हमने काफी सारी चीजों की बात की है, but I want to kind of like stress upon a few things and disagree on a few things as well. Sure. I think जो Zishan raised an amazing point के given even the new situation in the market और जिस तरह से दुनिया चल रही है, we should assume कि we are preparing our students for a global market, not for a local market, because of entrepreneurship, freelancing, remote work. There are so many possibilities out there. Okay, people are now aiming towards a global market instead of a local market, and we also need to realize that we are talking about really the kind of stuff that really conflicts with each other. जब हम बेसिक्स की बात करते हैं ना, तो जो इंडस्ट्री है, and from being industry, I'll admit, and I think all of us who are from industry should clearly admit this कि industry जो है ना, खासतौर पे services industry, it's too much worried about billability.
सो ये KPI ही गलत है कि एक नया यंग बच्चा आए और वो पहले दिन आकर ना मैं बिलेबल बना दूं उसको. Industry should invest in young learners to teach them कि वो क्या करते हैं. So ये expectation ही गलत है. For instance, we hire for great attitude, a great problem solving skill, empathy, a well-rounded experience. ठीक है? These are the things we look at when we are hiring a fresh graduate. And my experience has been totally different, and so that's why I'll kind of like rephrase some of the things that have been said. जब ये गैप हम फिल कर रहे होते हैं ना सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ खास तौर पे, तो हम फंडामेंटल्स को पीछे रख देते हैं और फिर हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ओके टीच दिस स्पेसिफिक लैंग्वेज और टीच दिस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एकेडेमिया शुड नेवर डू दैट. देखिए, इफ यू हैव टॉट अ किड this ability to learn the basics and master a language, they can go out there and learn another language. किसी को सी आती है वो पाइथन भी सीख सकता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है अगर उसको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है in essence, what it entails, why does a language other than the language that they have learned exists, उसके क्या pros हैं, क्या cons हैं, क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, what essentially is a language. ठीक है ना? So it's really important to teach students that instead of focusing on कि उनको कितनी लैंग्वेजेस सिखा दी जाएं. आई थिंक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड जो आफ्ताब की बात है मैं उनसे इस तरह से एग्री ज़रूर करूँगा कि इन्होंने एंड्रॉयड की बात की ना, तो यूनिवर्सिटीज़ एक आर ऑल्सो एन एवेन्यू टू गिव यू एक्सपोजर. सो डिफरेंट एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स, काइंड लाइक यू नेवर नो किसको क्या इंस्पायर करे. So it's very important for me, what I feel is a well-rounded experience is very important. If you have a great balance between right side of the brain and left side of the brain, so it's really good. It comes in handy a long way. Primarily, दुनिया जिस तरफ जा रही है in terms of employing your skill set for success and creating a sustainable career. So इसके लिए I think it's very important for a university like UMT to ensure what I call cross pollination. I have gone to a lot of universities. I've worked with LUMS as well, and NIC Lahore maybe मैं था. For that, NIC Lahore had the biggest outreach when it came to any incubator. So I've been in UMT a few times as well, and the faculty here, as by the way, has always supported and always showed up in my sessions as well. So really want to appreciate that. Coming back to what I was saying, so होता क्या है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर आपके बिजनेस के बच्चे भी बैठे होते हैं, टेक्नोलॉजी के बच्चे भी बैठे होते हैं, and I get questions like there is a kid from the technology school asking me, I can build something but I don't know how to sell, and there is a kid sitting in the same hall across the room, मुझे बेचना आता है पर मुझे बनाना नहीं आता, and they are in the same university, they've never talked to each other. So it's very important to ensure cross pollination as well in projects, somehow bringing them together, and also move away from the notion of ideas and invest into things like problems and understanding के problems क्या हैं, instead of focusing too much on ideas, because ideas की terms जो है ना, that focuses us to think about pure luck, eureka moments. These are not the things that work in a product industry. So it's very important to kind of like think about things जो कि that are off the courses being taught and primarily are related to the experience that you gain inside a university. And जब हम बात करते हैं ना collaboration की, one last thing that I'd add is practical work isn't good enough. A precise measurable technical work is very important. जब हम internship program की बात करते हैं ना कहीं भी, and okay, somebody is offering internship, not all of the internships are actually fruitful or useful experiences for students. It's really important for you to also have a strict criteria for us कि हम क्या offer कर रहे हैं आपको, and hold us accountable. It's not a one-way street. So I believe in all these things, and I wanted to kind of like put them out there too for this discussion. Great, Mansab. I think you have actually एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, please, अगर आपकी इजाज़त Aftab. हो। चलें, अच्छा, मैं यासिर साहब, आपकी जो 4 ईयर की आपने एक्सपेक्टेशन की बात की है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि समवन शुड बी अ टेक्निकल पर्सन. आई बिलीव कि अगर एक पर्सन के पास उसने 4 ईयर का टाइम स्पेंड किया एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंस्टीट्यूट में, सो उसकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, उसकी जो ग्रूमिंग के साथ साथ उसके ऊपर टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग में भी आई एम रॉन्ग, जो मैंने एनालाइज किया, जिस तरह से मैंने टीचिंग की, सपोज हम तो किसी को भी टेक्निकल स्किल सिखाने हो तो 2 मंथ्स के अंदर कोर्सेज में वो सीख जाते हैं, एक स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. बट आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि अगर आप 4 ईयर का टेन्योर है आपके पास, और इट्स अ बिग डील कि आप 4 ईयर की एक प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ की, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के में स्पेंड करेंगे, ठीक है.
तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई डेफिनेटली एग्री विद योर पॉइंट कि हमें सीखना चाहिए। जैसे मैं अपना जितना भी क्रेडिट होता है, जब भी होता है, तो यूएमटी को ही डिलीवर करता हूँ, उन्हीं को क्रेडिट देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बट जो मैंने स्ट्रगल किया, जो मैंने टेक्निकल चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया, उसका आई बिलीव कि वो यूनिवर्सिटी से 50% जो है वो रेलिवेंट है। अदर देन दैट वो मैंने खुद सेल्फ लर्निंग की है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप या तो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप 6 मंथ का कोर्स करवाएं, तो आप उसके बाद भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका बिहेवियर और ये तमाम चीज़ें चेक कर सकते हैं, और उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होगा। बट अगर आप 4 ईयर की प्लानिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो इंस्टेड ऑफ के लास्ट सेमेस्टर के अंदर जाके हम ये डिसाइड करें कि उसको किस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, या वो मार्केट में जाके किस चीज़ को सीखेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी शुड बी कैपेबल टू डू दैट. So he should be able to prepare a specific guy for a specific domain. So this is my agenda. Aftab, I never said कि technical skill important नहीं है. What I said was it's not important to learn every technical skill out there जो कि मौजूद है. It's important to understand. If you're learning a language, it's important to really understand at least one language कि वो कैसे बनती है, how a compiler is constructed, what's the reason of basically creating a newer language. If you understand these things, understanding a newer technology is never an issue. So I never said I totally agree कि process model को I'll go back to sorry Nakisa, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. I'll go back to what Zishan said. अब हम जिस मार्केट में है ना, if you want to survive, you'll have to pivot every few years. So the skill that counts is the ability to learn, putting yourself on a path to learn things on your own time. So it's really, really important to dig deep. आपको जो है ना and understand कि learn कैसे किया जाता है, because that's a skill that's going to last longer for you. Because आज हम देख रहे हैं ना, एक disruption हो रही है टेक्नोलॉजी की, न्यू स्टफ. You never know 5 साल बाद क्या होगा. This disruption might be even more frequent 10 years from now. So what I meant was to kind of like invest more in that. Technology learning obviously is super important. Your concept should be absolutely clear. I have no disagreement there. Zishan Saab, आपका take on this, sir. आप पढ़ाते भी रहे हैं, माशाल्लाह. You have been doing so many things in your life. Your take, sir. So Khalid साहब, थोड़ी सी अपनी आवाज थोड़ी सी बेहतर कीजिएगा जरा. जी. तो Khalid साहब, my thing is that if we look at, so let me say that if I was UMT, right? If I was an institution called UMT, what would I be looking at? So one perspective is that I look at from the perspective of, okay, I've got a 4-year undergrad program and I've got an additional 2 years of master's program to 6 years. So let me try and basically create some value for the student on the basis that after that 6 years or 4 years, when they graduate, they're able to get employed, right? That's one view. कि आपने पहले से एक time window define कर ली है कि 4 साल की engagement होनी है या 6 साल की. My thing is that if I'm at any university, UMT or any other institute, if I start looking at the student as an opportunity for lifelong learning for that person, that lifelong opportunity would be कि भाई इस शख्स को what are they, and again we'll be building on what Aftab said and what Yasir said, is that, for example, Aftab spoke about कि उस student की inclination क्या है, उसकी tendency क्या है, उसको रुझान क्या है. So some level of screening जहाँ से आप उसको आप gauge कर सको कि इसके natural, इसके skills, इसकी aptitude, इसका interest, इसका शौक किधर है. दूसरा, when we look at the name like UMT, University of Management Technology, so I see it's a very technology based company. If you were to imagine, just what if there was a mosaic that was created to each and every student, कि जी इस स्टूडेंट के जो है नेचुरल एस्पिरेशंस के स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड किस चीज़ में है, और उसको भी डेवलप किया जाए, बजाय कि स्टूडेंट को हमने ग्रेड करके इसको देखना है कि इसको आखिर में इसको जीपीए क्या मिलेगी, इज गोइंग टू गेट 3.5 जीपीए आउट ऑफ 4 और इज गोइंग टू 2 और व्हाटएवर. तो जीपीएस और आपस में ये जो मॉडल है ग्रेडिंग का, द चाइल्ड आल्सो बिकम्स सो ग्रेड सेंट्रिक, उसको हम एक तरफ पार्क करते हैं, राइट. और हम कहेंगे जी ये इंडिविजुअल हमारे पास आया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े आराम से इसकी प्रोग्रेशन को हम मैप कर सकते हैं, हाउ दिस पर्सन इज डेवलपिंग both in terms of hard skills as well as the soft skills for the near future,
And we'll maintain this mosaic or this portfolio, digital portfolio on this individual کہ اس کی جو نیڈس ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ گریجویٹ کر کے انڈسٹری میں آ بھی جائے گا تو اوور ہز ٹینیور اور ہز کریئر ہز نیڈس فار اسکلز ول کیپ آن چینجنگ کیپ آن ایوالونگ بٹ واٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو از لوز ہیم اور ہر because we will be building this internal database on this person, and through that there will be an ongoing engagement with him which could go up to like 10 years, 20 years, 25 years, 30 years, whatever the duration is, right? اور اس کی نیڈ کے حساب سے وہ ہمارے پاس آتا جائے اور ہم اس کو اس کی جو بھی نیڈ ہے اس کے حساب سے اس کو اسکلس میں ٹرین کریں، رائٹ؟ تاکہ یہ جو ہے ایٹ ایوری اسٹیج ہی ریمینز ریلیونٹ. I did my MBA back in 1997, right, from Australia. زمانہ گزر گیا. میں اب پڑھاتا ہوں as a visiting faculty, and the biggest incentive for me to come and teach is for me to relearn or learn what is now relevant. What I learned when I graduated so many years back, it's not going to hold true. The business models are changing. Companies like Careem and Uber and Food Panda, right? WhatsApp, Netflix, they did not exist when I was graduating from my university back then. آج سے 5 سال بعد کیا چیزیں ہوں گی, کس ٹائپ کے اسکل سیٹس کی ڈیمانڈ ہوگی. For me as an individual to keep on being relevant and keep on being something where I can still have, I can demand a certain market price, I need to keep on upskilling myself. So if we take the same concept and start applying, کہ ہم نے at UMT اپنی انگیجمنٹ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ 4 سال یا 6 سال میں ختم نہیں کرنی, بلکہ یہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے, اور یہ ہماری اینڈ سے جو ہماری کوشش رہے گی کہ تھرو آؤٹ ہز لائف span we are able to facilitate whenever he or she feels that they would like to come and get reskilled. Right, great, Ishan Saab. I think your point well taken. And future, as we all know, is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Nobody knows what data which we are generating today will be applicable tomorrow or not, because the workscape, the landscape, everything is changing. تو ہمیں اس کے لیے بہت ایجائل رہنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو ریلی ورک ٹوگیدر کولیبریٹو وے میں, اینڈ ٹو ٹرائی اینڈ کم آؤٹ آف دس unexpected scenario. So now I will request all of you to give your last thoughts before I formally close the session, because سوا گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے. تو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شعیب فاروق بات کروں, کیمرہ اویلیبل ہے جی. ایکچولی میں کچھ چیلنجز ڈسکس کروں گا جو ایز اے فیکلٹی ہمیں فیس ہوتے ہیں انڈسٹری سے لائزن کرتے ہوئے. نارملی ایشو یہ ہے کہ ہم سب لوگ بی ایس سی ایس پروگرام میں, بی ایس ایس سی میں, بی ایس آئی ٹی میں ہم سب لوگ باؤنڈ ہیں کہ ایچ ای سی کا کریکولم فالو کریں. ساری یونیورسٹیز ایچ ای سی کے کریکولم کو فالو کرتی ہیں. اب ایچ ای سی کریکولم میں منیمم 40 کورسز ہیں, اور میکسیمم نارملی 40 to 48 کورسز ڈفرینٹ کریکولم جب ریوائز ہوتا ہے. ہمارا کریکولم کنٹینیوسلی ریوائز ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایکریڈیشن ریکوائرمنٹ ہے کہ کریکولم اپ ٹو دی مارک اور اپڈیٹڈ ہونا چاہیے. تو کریکولم تو ہمارا ریوائز ہو رہا ہے, لیکن اب ایشو یہ ہے اس میں جو 48 کورسز ہیں اس میں سے صرف 5 کمپیوٹنگ الیکٹیو کورسز ہیں. باقی سارے کور کورسز ہیں, یا میتھمیٹکس کے ہیں, انگلش کے ہیں. میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ 5 کورس پڑھتا ہے, انگلش کے 3 کورس پڑھتا ہے, یونیورسٹی الیکٹیو 5 کورس پڑھتا ہے. باقی جو کور کورس ہیں جیسے پی ایف ہے, اوپ ہے, ڈیٹا اسٹرکچر ہے, وہ کافی سارے ہیں. لیکن صرف 5 کورسز کا مارجن ہے جو کہ الیکٹیو ہیں. ان 5 کورسز میں ہم بلاک چین پڑھا دیں, کلاؤڈ پڑھا دیں, یا مے بی ڈیپ لرننگ پڑھا دیتے ہیں, کوئی جو ٹیکی کورسز ہم پڑھا سکتے ہیں. تو ہمارا مارجن صرف 5 کورسز کا ہے. اب ایشو کیا آتا ہے, اسٹوڈنٹ اب ایف آئی پی رجسٹر کر رہا ہے, وہ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں وہ 5 کورس لے رہا ہے, وہ لاسٹ سیمسٹر میں 5 کورس لے رہا ہے. اب وہ 5 کورس کے لوڈ کے ساتھ ایف آئی پی بھی لے رہا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 5 کورس کا لوڈ ہے, اور اگر کسی کورس میں لیب بھی ہے تو 3 آورس کی لیب ہوتی ہے. اگر 5 کورس اگر فادر 3 کیٹیگری میں ہو تو 5 into 3 15 آورس وہ پڑھ ہی رہے. اگر ان 15 آور میں لیب بھی کر رہا ہے تو وہ 20 آورس سے زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں دے رہا ہے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اگر 20 to 25 آورس یونیورسٹی میں دیتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا ٹائم دے گا ویک کے اندر؟ کوشچن یہ ہے. اب کوشچن سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک سجیشن ہے کہ ہم ہاؤس جاب شروع کریں. جیسے میڈیکل ڈاکٹر 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں, تو ہمارا اسٹوڈنٹ بیزی ہے, یعنی کہ آپ کے 4 سال کے اندر وہ انڈسٹری میں بھی کام کرے,
बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, वो कैपेसिटी वाइज जिन लोगों की कैपेसिटी अच्छी है, बहुत से स्टूडेंट 4th सेमेस्टर से ही इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स कॉप नहीं कर पाते। यानी कि आप करंट फैक्ट्स में देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सिर्फ 5% लोग प्रोग्रामर बनते हैं, सारे लोग प्रोग्रामर नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान के फैक्ट्स नहीं है, ये आप यूएसए के फैक्ट देखें, इवन एमआईटी के जो जनरल फैक्ट देखें, 5% से ज्यादा लोग प्रोग्रामर नहीं होते। अब आपने स्टूडेंट में 48 कोर्सेज का बर्डन डाला है, जैसे 4 ईयर में पढ़ने हैं, और 4 ईयर में आप एक्सपेक्ट करें कि वो इंडस्ट्री में भी इंटर्नशिप करे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट शायद ये कॉप नहीं कर पाते। तो मे बी वो 5% स्टूडेंट्स ही आपको मिलते हैं। अगर आप कहेंगे 4 साल के अंदर मुझे कितने स्टूडेंट मिलेंगे, वो 5% ही लोग मिलेंगे। वो 5% जो अच्छे प्रोग्रामर होते हैं, नो डाउट वो इंडस्ट्री के साथ लगभग, बट रेस्ट ऑफ 95 का हम क्या करें। और उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर हम हाउस जॉब स्टार्ट करें, यानी कि 5th ईयर में जैसे डॉक्टर करता है, तो वाई नॉट के स्टूडेंट्स जो कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें 5th ईयर के अंदर। बाकी जहाँ तक करिकुलम की बात हो रही है, करिकुलम अपडेट हो रहा है, लेटेस्ट कोर्सेज की बात हो रहे हैं, हम उन 5 कोर्सेज, उन 5 में लेटेस्ट कोर्स अटेम्प्ट से स्पेशल सेमिनार्स भी हैं, टॉक्स भी हैं, स्पेशल ट्रेनिंग्स भी हैं, वो यूनिवर्सिटी में रेगुलर ऑन गोइंग बेसिस पे हो रही होती हैं। तो एक बार अगर सॉफ्टवेयर हाउसेज ओपन पॉलिसी बना दें इंटर्नशिप की, और पॉलिसी प्रॉपर हमसे एक्सप्लोर कर दें, तो हम आपको बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हैं टाइमली रेफर कर सकते हैं। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इनके वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सारे स्टूडेंट नहीं होते, और ये परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन वो परसेंटेज भी काफ़ी है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर हाउस को अगर वही 5% स्टूडेंट अगर हम स्प्रेड आउट करें, हमारे पास 4000 स्टूडेंट है, तो 4000 का 5% भी एक बड़ी अमाउंट बनती है। Can I respond to that, Nikki sir? Yeah. Please. I think it's open session now. It's absolutely great, Shape. You have hammered some sense into kind of like the room. How we've talked about radical models, and radical models are awesome. Radical models should be something that we should look at, and we know okay, there is a journal kind of like restriction when it comes to systems, and how HEC looks at degree and on hota kya in the radical attempts that we are trying to change things. हम वो भी नहीं कर रहे होते जो हमारी कैपेसिटी में होता है. And you have absolutely hit the nail right on the head. And I'll share the same experience. I run probably country's biggest internship and fellowship program. Last year we trained about 160 students, and about we had 50 ke kareeb graduates coming out of our program. These were mostly students from senior, junior, sophomore years, and some of them were freshmen as well. And so what I feel is कि वो जो 5% है उन पे सबसे पहले तो उन पे attention देने की जरूरत है. And the way to go about it is to kind of like give them hand holding. What I've seen is, and this includes UMT as well, I see some great teachers there who have personal experience do a lot of hand holding when it comes to interacting with the students. So it's eventually boils down to that personal intimate connection between a student and teacher that kind of like helps a student go a long way. And I'll share this experience when we started our internship program last year, and we got about 700 applications. And the reason that number is so important is not because it's big, because CV फेंकना तो कहीं भी फेंका जा सकता है, and people will throw in CV अगर आप एक job या internship advertise करते हैं. But we had a proper form that had some very important questions that will force you to do some soul searching to answer those that were part of that application. They were mandatory, and 700 of those kids took time to answer those questions and applied for that program. Now we started talking to these kids, and we talked to about 70 kids and 70 one-on-one interviews, and we saw a theme. And I'm now going into a vertical, which is the gaming vertical, a game development vertical. So I'm primarily going to talk about that in the context. We saw this theme ke these are the kids, their parents don't appreciate their skill कि अच्छा यार इसको games बनाने का शौक है, वो कहते हैं यार ये वक्त ज़ाया हो रहा है. Unfortunately, most of them, their teachers don't appreciate it as well. They say it's a waste of time. Their peers don't appreciate it, which came as a surprise to me, because उनके जो class fellows हैं वो कहते हैं यार तुम्हारे साथ project नहीं करना, तुम हर project में game गुजार लेते हो, तो हमसे नहीं होता भाई, ना हम करना चाहते, ठीक है ना. So now we thought and said कि अच्छा यार हमारे पास तो 8 positions and internships की, what should we do now? So we launched a fellowship program that kind of like brought these kids on board. We gave them detailed, extensive training on game design, development, art, data-driven decisions in game designs, and all those things. And we gave them mentors from industry that could do one-on-one hand-holding with those students. And we pushed them to कि अच्छा यार आओ और do practical projects with us. Out of the 21 teams that we had formed, 17 teams delivered those projects. And some of them were really, really good. So what I feel is कि जो आपने बात की ना, जो 5%,
I think it's very important to start with and do a lot of one-on-one hand holding when it comes to those 5%. ताकि वो तो कहीं जा सके ना, and then we from that we create processes that cater to everyone, and obviously we fight those battles okay, that have to be fought with the regulatory authorities who are regulating education and all those things. But it's really, really important. I think you've raised a very important point. Great, sir. Anybody with any comment, please feel free to talk and discuss and share your thoughts, concerns, challenges, anything which comes to your mind. So I'm assuming Zishan sir, आपका mic off है. Maybe you're saying something. Sorry. So one comment from my end. There are models which are being implemented and are being done elsewhere, and they are showing very promising results. I'm talking about University of Waterloo in Canada. They have, as part of their undergrad program, they have an apprenticeship program which is built into it. जिस तरह आपकी जो corporate team है UMT में, the initiative that they've taken, that they've reached out, they've come, they've met us, they've invited us, and we're having this conversation today. इसी तरह, things in a much more structured manner are being done at University of Waterloo, where the university faculty or their administration reaches out to the industry, and basically with them they co-design the curriculum, right, or the program. और उसके अंदर जो है, there is a theory aspect, university उनकी अपनी strength है, अपनी research है, वो चीजें, और साथ साथ जो उनके capstone projects होते हैं, या not just the capstone, but could be capstone project by a certain subject. Those are the industry based. So industry shares with the academia, this is the problem, and उसको आप देखें किस तरह आपने अपने प्रोग्राम में पढ़ाते हुए आपने ये सॉल्व करना है. The industry is happy to pay a stipend to these students because end of the day it costs them far less than if they were to hire people full time to come and work and try to solve the problem, right? So that's the kind of collaboration which is being done. It's a win-win for all three. It's a win-win for the students because they're working on actual practical challenges being faced by companies like Google or Apple, right, or Microsoft, and they are also being paid a much better amount of stipend than a normal summer internship or, you know. Plus, whatever work they're doing, the industry gets to know कि भाई जो बच्चा है, जो universities ने भेजा है, who's working on this capstone project, उनके आपस में उसको gauge करने की opportunity बहुत बेहतर है as compared to a job interview, right? So employability goes up for that child. The industry की engagement या business की engagement with the university बहुत बेहतर हो जाती है, and the university itself also benefits a lot because they know to need, they get to understand what are the pressing problems that we from academia can try and basically research and try to help to address. So these models are being done in certain universities that we read about. Great, Science Up. Thank you very much, everybody, for your time. So if I'm trying to go for make a global summarization क्योंकि इतनी diverse angles पे ये सारी talks हुई हैं. So what I've drafted here is that leaders this era, especially a digital space में and IT space में, they need to have both soft skills and the hard skills. Academia जो है वो learning कराता है, industry जो है वो skill मांगती है, तो they should work together to come to terms with each other. And then they need critical thinkers, problem solvers, graduates जो है उनका end game, and be able to interact across the globe as a global citizen, and they need to be liberally educated so that they can absorb all the things and discuss it further. Problem solving skill बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, और languages आप पढ़ें, उसका कोर्स समझ लें, how it is all done. Technology will keep on changing, तो आप उसको नई technology आए, it may take you 7 days to get certified or 10 days. तो कुछ होंगी जो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेंगी, लेकिन बाहर once you have the core set nicely, then rest becomes just run of the mill. And then
students के लिए they need to develop new ways of communicating. They need to be put in front of complex situations to develop critical thinking. Academia के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें to qualify them as graduate, we should be giving them complex situations to develop critical thinking and complex problem solving solutions. जैसे भी एक साहब ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आंसर ठीक हो, but your approach to solving a problem matters. और वो जितनी conceptual skill अच्छी होगी उतना अच्छा आपकी approach भी होगी. And then inspire, hire उन्होंने कर लिया एक graduate को, inspire and train. हर कंपनी ने भी जिम्मेदारी लेनी है. We are willing to share our resources with the industry. Come forward, work with us, and we'll try and give you the resources that you need. And the resources should, and we can even put you in our roadmaps, academic journey mein, jahan pe you can even look at, you know, the imagination, the creativity, the adaptable, flexible, and to develop just like left hand side of the brain and right hand side of the brain, both should be functional. All those factors can be brought in front of the cognitive mind, and लोगों को उस पे सोचने में मजबूर किया जा सकता है. आप आके गेस्ट स्पीकर सेशंस करें, बैच पिक करें, उसको तैयार करें. तो we may send you some proposals for your review, and उस पे आपकी thoughts आप जरूर भेजिएगा. And we will try and take it further from here. This is not the end of it. It is beginning of a very long journey. And inshallah, with your collaboration, we will see कि हम road maps और क्या कर सकते हैं, given the flexibility. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि we are governed by different bodies, उनका भी हमें compliance देखना है. तो keeping in view the limitations, हम क्या maximize कर सकते हैं, that we'll try to do with help with you. Thank you very much for your time. Inshallah, we'll connect with you again. So till such time, take care of yourself and take care of this corona factor also, because we IT के बहुत सारे दोस्त जो हैं, they are under it. So please take care of yourself, stay safe. Thank you very much for your time. Assalamu alaikum. I'm signing off now. Thank you so much.